Assalamualaikum dear students. Today is lecture number 25 of class first year. Your subject is mathematics. So in last lecture, lecture number 24, we have solved exercise 9.2. Dear students, in this lecture, we are going to solve exercise 9.3. So in this lecture, there is a question number 1, evolute sine pi of 3 cos pi by 6 minus cos pi by 3 and sine pi by 6. Dear students, first of all, you must have to remember the sine 0, sine 30, what value of sine 0, sine 30, sine 60, and also sine 120, sine 90, cos 120, cos 30, cos 80. Also, it means you must have to remember all these values. In last I have given that values, you must have to remember these values. You must have a screenshot of this value, trigonometric ratios, and इस तरह यहाँ पे साइन थीटा बराबर है 130, साइन 30 बराबर 1/2 के है, साइन 45 1/√2, साइन 60, साइन की वैल्यूज़ गिवन है। 30 पे क्या होगी, 45 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी, 120 पे क्या होगी। इसी तरह कॉस की गिवन है, टेन की गिवन है, कॉस थीटा की गिवन है, और सेक थीटा की गिवन है, और कॉट थीटा की गिवन है। और आपने ये भी चीज़ पिछले लेक्चर में स्टडी करके रहे हैं, अगर रेडियन में होता पाई बाय 4, पाई बाय 6, यहाँ पे भी रेडियन में भी गिवन है। पाई बाय 6 30 को कहते हैं, पाई बाय 4 45 को कहते हैं, 60 पाई बाय 3 कहते हैं, पाई बाय 2 90 को कहते हैं, 1/120 2 पाई बाय 3 को कहते हैं। इसी तरह these all trigonometric ratios you must have to remember. That is your assignment. You must have remember. After these remembering that trigonometric ratios, you values, you must have to solve this examples exercise 3.7. So sin pi by 3 and cos pi by 6 minus cos pi by 3 and sin pi by 6. So sin pi by 3, which is equal to square root of 3/2, and cos pi by 6, which is equal to square root of 3 minus sin pi by 3 is equal to 1/2, and sin pi by 6, which is equal to 1/2. Dear students, you just have to multiply that 3/4 minus 1/4. Dear students, जस्ट ये क्या करना है, यहाँ पे पाई बाय साइन की वैल्यूज़ और कास की वैल्यूज़ याद करनी है, और आपको जस्ट वो वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, और मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके जो जवाब निकलेगा वो इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे आपके लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पाई बाय 60, पाई बाय 40, पाई बाय जो है वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। So there is another sin pi by 4, cos pi by 4 minus tan pi by 4. So sin pi by 4 1/square root 2, cos pi by 4 1/square root 2 minus tan pi by 2 1. So 1/2 minus 1, 1 minus 2/2, so which is equal to minus 1/2. So another question is that sin pi by 3 cos pi by 6 plus tan pi by 6 and tan pi by 3 is equal to 7/4. हमें वो प्रूव करना है। तो sin pi by 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, cos pi by 6 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, प्लस tan pi by 6 की वैल्यू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है साइन प्लस tan स्क्वायर पर 6 और tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6। सो tan 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अगेन 1/3 का अपॉन में स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 6। इसका वैल्यू जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 4. सो 4 इज इक्वल टू 4, यू इट इज प्रूव दैट. So dear students, remaining problem of that exercise 9.3, you must have to solve, and it is easy to solve this exercise. Thank you dear students.